In today's class, we have seen about the switch statement. In the previous class, I have already talked regarding the case statement. In case statement, we can use select, update, modify statement. But in switch, we can't use this type of statement. Also, we can't use this subroutine, performs, and update, modify this. So in switch, we must use then, when, and then. But in case, because case is a statement and switch is a expression. So first, declare a variable lv num type I value 3. Then lv text type string. Then lv text is equals to switch string lv num. मतलब यूजर जो भी वैल्यू डालेगा हम यहाँ पे फिक्स कर दे रहे हैं, मैं पैरामीटर लेके नहीं कर रही हूँ, वो lv num में जाएगी और वो lv टेक्स्ट में जाके स्टोर हो जाएगी. अब हम यहाँ पे करेंगे when. मैं when 1 then 1, after that when 2 then 2, when 3 then 3, after that else other number. अब हम क्या करेंगे, अपने जो भी वैल्यू को सेलेक्ट किया हम उसे प्रिंट करेंगे, किसको, एलवी टेक्स्ट में, जिसमें वो फाइनल आके स्टोर हो रहा है. जस्ट सेव, आई थिंक इट्स कैपिटल, देन it's saying switch is unknown, switch string type I. Wait, yeah, now just save. After writing the switch, give small braces, but between the switch and your small braces don't give any space. Check syntax, activate your program and do effect 3. Why 3 is can? Because in place of 3 it's returned 3 and we have already assigned a value 3 here, so this is the reason our output came 3. When I change this output, when I give the value in place of value 2, then activate your program and just do effect 2. So switch is a expression. What? Switch is a expression, but case is a statement. In switch we can't perform looping, update, select, but in case we can. Understood? So this is the difference between switch and case. In case we only use case when, but in switch we use when then. मीन्स कि केस में हम ये बताते हैं कि अगर ये वाली स्टेटमेंट चली तो उसके बिहाफ पे क्या एक्शन परफॉर्म हो रही है, बट स्विच में अगर ये सेलेक्ट किए तो देन क्या होगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड केस. वी विल सी सम मोर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.